Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we are starting with a new chapter today, chapter number 7, that is an imperial capital, Vijayanagara, which is basically, you can say, dominated India around 14th to 16th century. When we start to know more about this particular empire, name only suggests Vijayanagar, matlab city of victory. Vijay we know is somebody who is victorious, who has succeeded. तो victory और नगर मतलब city, तो city of victory है. And इसके बारे में specific हम क्या बोल सकते हैं? This is a city as well as an empire. ओके सिटी भी है विजयनगर और एम्पायर भी उसी के नाम पे इन्होंने एक्सपैंड कर दिया था. नाउ इसको अगर हम देखें, ये बेसिकली दिस एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी इन इट्स हेडे मतलब जब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, स्प्रेड आउट है, तब इट स्ट्रेच्ड from river Krishna in the north to the extreme south of the peninsula. Now वैसे तो if I talk to you and ask you where is river Krishna located, you will obviously say मैम southern part of India. पर अगर हम विजयनगर एम्पायर के एक्सटेंशन के हिसाब से बात करें तो विजयनगर की जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा है कहाँ तक था, वो कृष्णा रिवर जो है वहां तक स्प्रेड आउट था. एंड नीचे तो जो इंडियन मेनलैंड है वहां के पूरे एरिया के ऊपर इनका कंट्रोल था. So though 17th 18th century के around this was the empire that totally saw ruin or decline हो गई थी, but still it stayed in the memories of the people because ये एक बहुत ही ऐसी एम्पायर थी जो पॉलिटिकली नहीं, आर्किटेक्चरली अगर आप देखो जिस हिसाब से उनके मॉन्यूमेंट्स बिल्ट आउट थे, जिस हिसाब से उनका कल्चर था, एंड ऑल ऑफ दीज एक्चुअली ऑलवेज स्टेड इन द मेमोरीज ऑफ द पीपल, ओके, एज गुड मेमोरीज. एंड बेसिकली पूरा जो लोग कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब के अराउंड जितने भी हम बोलेंगे लोग हैं या जो भी हैबिटेशंस है, they always look up to this Vijayanagara empire and they remembered it as Hampi, the name that is derived from that of local mother goddess जिनका नाम था पंपा देवी. तो उनके नाम से जो मेन सेंटर था विजयनगर एम्पायर का, हम्पी, वो नाम रखा गया था. एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से प्रॉस्परस सिटीज ऑफ दैट टाइम. इट इज कंसिडर्ड दैट इट वाज, अगर हम कंटेम्पररी टाइम पीरियड की बात करें तो इट वाज अमंग द टॉप डेवलप्ड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम. ठीक है, I suppose it was actually the second most you can say prosperous city of that time. अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे अपने पास how do we know about this time period? Obviously we will say ma'am archaeological findings है, we have monuments, we have written matters available, we have inscriptions, but oral traditions भी बहुत है यहाँ. ठीक है, यानी लोगों से जो चलती आ रही है बातें, द थिंग्स दैट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पीपल आर हियरिंग, और उसके बेसिस पे हमें इनके टाइम पीरियड के बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता है, अलोंग विद द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, रिटन पार्ट्स एंड all the other things, the things that are available for us as source of history. This was the background of this Vijayanagara empire. Now let us move on to the discovery of Hampi. Now when we talk about discovery of Hampi, we'll see that it was basically brought to light in 1800. ठीक है, तो 1800 के अराउंड इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस आया था इस एरिया के ऊपर. एंड हु वाज द पर्सन हु ब्रॉट दिस होल अटेंशन टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर प्लेस? ही वाज एन इंजीनियर, पर उसके साथ साथ वो एंटीक्वेरियन भी थे. एंटीक्वेरियन क्या होता है? जो एंटीक्स की स्टडी करते हैं. ठीक है, बाय कर्नल कॉलिन मैकेंजी. ठीक है, तो इन्होंने फोकस किया था, इनको पता चला, ही जस्ट फाउंड आउट दैट हम्पी इज रियली अ गुड प्लेस एंड दिस इज अ प्लेस वेयर you can say एक empire must have flourished very very nicely and must be a very big empire, expanded empire. So he started to search out more about this empire, और specifically हम्पी में अब यहाँ पे बहुत ज्यादा attention हुई and people were wanting to find more about these areas.
So an employee from the English East India Company, he then prepared the first survey map of this site. Okay, though we know at that time English East India Company was most dominant in India, तो वो उनके employee थे and उन्होंने first survey map prepare किया इस पूरी site का and जो initial information उनको जो भी यहाँ की receive हुई थी were based on the memories of few priests. ठीक है, कौन से प्रीस्ट थे वो? विरूपक्षा टेम्पल के प्रीस्ट थे एंड द श्राइन ऑफ पंपा देवी. यानी इनिशियली व्हेन ही फाउंड आउट दैट दिस इज अ प्लेस दैट हैज सो मेनी बिल्डिंग्स, सो मेनी मॉन्यूमेंट्स, मस्ट हैव बीन एन इंपॉर्टेंट प्लेस, लेट अस सर्च मोर अबाउट इट. तो उन्होंने सबसे पहले इंफॉर्मेशन किससे ली? जो प्रीस्ट थे उनकी जो मतलब वो बताते थे कि दिस वाज द टेम्पल, इसके पीछे की ये स्टोरी है, दिस वाज दिस वाज. सो इनिशियल इंफॉर्मेशन उनको वहां से मिली थी फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ द priest of the Virupaksha temple and the shrine of Pampani. ठीक है, अब आगे क्या हुआ वो देखते हैं यहाँ पे. Then we'll see that from around 1856 क्या हुआ कि फोटोग्राफर्स जो है वो अब मॉन्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करने लग गए, उनको प्रिजर्व करने लग गए, जिसके कारण जो स्कॉलर्स हैं वो उन पिक्चर्स को देख के स्टडी कर सकते थे अबाउट द थिंग्स दैट वर अवेलेबल इन हम्पी. As early as 1836 जो एपिग्राफिस्ट थे ना, अब वो कलेक्ट करने लगे इंस्क्रिप्शंस को. There were several dozens of inscriptions that were found at this place and even in temples of Hampi. तो अब वो लोग कोशिश कर रहे थे कि इस एरिया की, इस एम्पायर की हम हिस्ट्री को समझते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द मेजर प्रोसीडिंग, व्हाट वर द थिंग्स दैट वर डन. ओके, हिस्टोरियंस कोलैबोरेटेड, यू कैन से, या कोशिश की उन्होंने रिलेट करने की इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सोर्सेज with the accounts of foreign travelers and other literature written in Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit. हमें पता है this is an empire in the southern part of India, तो obviously मिडिवल टाइम को मोस्ट डोमिनेंट लैंग्वेजेस जो है वो यही होगी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल एंड संस्कृत. ठीक है, अब यहाँ पे अगेन प्लीज फोकस एंड ट्राई टू गो बैक टू आवर अर्लियर चैप्टर्स. हमने हमेशा पढ़ा है, जो हिस्टोरियंस है वो ट्राई करते हैं रिकंस्ट्रक्ट करने की हिस्ट्री. कैसे? बाय रिलेटिंग इट टू द लिटरेचर दैट इज अवेलेबल, not only of that particular place but also of the foreign travelers. कि foreign travelers आए थे वहां से, तो उन्होंने क्या विजिट किया था, कैसा उनको लगी थी इस एरिया, ये जो एरिया है इसके बारे में कोई स्पेशल चीज लगी थी, या कैसी यहाँ पे सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी और बाकी एक्टिविटीज होती थी. on the basis of that they try to you can say understand what was more important during that empire, और empire basically कैसा था. ठीक है, तो फॉरेन ट्रैवलर्स और बाकी जो लिटरेचर मटेरियल अवेलेबल है, दैट इज समथिंग दैट दे रिलेट एंड देन दे ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर एम्पायर. ठीक है, नाउ हियर प्लीज रिमेंबर दीज लैंग्वेजेस बिकॉज अगेन दे कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, सो द पॉइंट हियर इज, हमें पता है कि उन्होंने पिक्चर्स कलेक्ट की, उन्होंने एपिग्राफिस्ट ने पढ़ना शुरू किया और कोशिश की रिलेट करने की, जो भी लिटरेचर अवेलेबल है और जो फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स है उनको रिलेट करने की कोशिश की with the materialistic sources that they were trying to survey and then they were trying to find out more about, चाहे वो buildings हो, चाहे मतलब not only materialistic पर बाकी जो भी उनको sources मिल रहे थे उस टाइम के बारे में. ठीक है, तो ऐसे तो हो गया कैसे हुई डिस्कवरी ऑफ हम्पी एंड देन हाउ डिड व्हाट ऑल हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम. Now again there is a box that is given in this book on page number 171. I just want you people to have a look at it and then we'll discuss it. Okay, box is telling us that Colin Mackenzie was born in 1794 and he became famous engineer, surveyor and cartographer. Cartographer क्या होता है? Somebody who knows the art of preparing maps. और हमने पढ़ा भी था in a previous slide कि he was the person who prepared the first survey map of this site, है ना? So then in 1815 he was appointed as the first surveyor general of India. And this post, he was in on this post till his death.
That is in 1821. And then he started collecting local histories. He tried to find out more about the historical sites of India, and he wanted to understand India's past so that the colonial government can rule India easily. ठीक है, the main focus यही था कि हम अगर इनके culture को, इनके बारे में समझेंगे तो इनको इनके ऊपर rule करना easy होगा. Obviously he was somebody who was under East India Company, तो अपना, and again then he was a British, so being loyal तो will obviously will be towards the British. But then whatever it be, he focused on finding out more about the history of India. So he says that it struggled long under the miseries of bad management before the South came under the influence of the British government. Simple terms में क्या बोल रहे हैं, इससे पहले तो बहुत bad management था, specifically historical चीजों का, या हम अगर उनके जैसे आर्कियोलॉजी या एक्सकवेशन, ये जो सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था. और जो पुरानी चीजें हैं, they were actually somewhere destroyed या properly manage नहीं की जाती थी before coming of the British government. ठीक है. So then he said that by studying Vijayanagar, East India Company could gain much useful information about many of the institution, laws, customs, which people still believe, and these were the things that will help them to govern more easily. Especially जो कुछ tribes थे, जो native people थे, they were still ruling, they were still following their culture and the kind of customs that were being followed at that time. So that is why he was searching more, and because of which we got to know more about this empire, that is Vijayanagar Empire. Now class, this picture that is shows us Mackenzie and his assistant, and this is basically हम बोलेंगे एक copy है of unknown artist. Copy की है उन्होंने किसकी, जो oil painting by portrait painter Thomas की. And around 1825 के अराउंड की ये डेट है इस पेंटिंग की. और अभी this is a part of collection of Royal Asiatic Society of Britain and Ireland. अब we need to focus कि how is this person shown. मैकेंजी के लेफ्ट में है उसके पियोन किस्नाजी, जिन्होंने टेलीस्कोप पकड़ रखा है. ऑन राइट ब्राह्मण असिस्टेंट है, एक जैन पंडित भी है राइट, और पीछे जो है वो तेलुगु ब्राह्मण भी है, कोविलरी वेंटक लेचुनिया. ठीक है. सो ये इनका नाम है. तो what do we understand, that this is the person who is not only finding about the historical evidences, but he is trying to understand it with the help of the, you can say, local people there who may be knowing more about the culture and all. Okay, and also obviously will help him in understanding more about this area. So this was basically about Colin Mackenzie, and we have understood why it is important when we talk about the Vijayanagara Empire. So now when we know about, you can say, the background of the Vijayanagara Empire, now we'll be talking about the major emperors of this time period. कौन कौन रूल करते थे इस एरिया पे, कैसे इसका हम बोलेंगे establishment हुआ of this empire, and then how will we move on कि कैसे ये जो empire है इतना prosperous हुआ, what were its special qualities and all sort of things regarding this empire. Okay, so regarding this empire and the important emperors, we'll basically have more information in tomorrow's class. So this is it for today. Just give this portion a reading and come back if you have any doubt, and we'll continue with the chapter in our next class. So bye for today.